I got a nice deal. चिकन शेजवान रोल, मेरा वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया. चिकन सीख कबाब. मोदी जी से पहले न्यूज इनके पास थी. ब्लर करना पड़ेगा. Be very serious, Naptor. So see you after the movie. Okay, I farted. Drop it. Good morning. काला धन देखने गए तुम लोग को? काला धन क्या देखो? काला धन. I have not been to the post office since many days. Almost एक हफ्ता हो गया. So now I'll be going to the post office and checking out PO box में कुछ आया है या नहीं. And I have some other work too. कुछ courier करते हैं और I have got myself a new watch. So yes, I'll be showing you the new watch. I'm back home and well, I did receive one letter. Finally PO box में कुछ तो आया. अकाल पड़ा है PO box में. And here is my watch. Here is the watch I was talking about. Have a look at it. It's not a smartwatch, but something I always wanted, like from ages. So yeah, अगर आपको ठीक से दिखानी है तो I had posted a picture on Instagram as well. So you can check out my Instagram account if you haven't yet. I'll just read this letter. So the person has not written his name, but the letter, he wishes me happy Diwali and all those good things. He has mentioned one very important thing, that is grocery stores में change के बदले आपको chocolates देते हैं. तो do tackle this issue is what he is trying to tell me. So I would like to remind you कि नाना पाटेकर का एक incident था. वो एक shopping mart में जाते हैं और फिर उसको chocolate थमा देते हैं change के बदले. तो वो आप ज़रूर देखिए. That is what you can do, but getting that annoyed is like really bad. What you can do is you can simply tell them कि यार मुझे chocolate नहीं चाहिए. I don't want chocolate. I need my change back. As simple as that. You just have to ask for it and you'll get it. I'm sure about it. Give me my change. And as far as this watch is concerned, it is normally retailed for around 8,900 rupees or something, but I got it for around 5,000 rupees. Yeah, there was a massive discount on Amazon and I grabbed that deal as soon as possible. Long story short, I got a nice deal and I wanted this baby since long. She wants to have tea and I want to have coffee. So what she suggested is we'll do a toss. ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है. So heads I win, tails you lose. Don't be over smart, okay? Okay, heads I win, tails I lose. Show me what it is. Yes, heads I win. Coffee it is. Very funny. So we'll have coffee. काप गरम गरम काप पिएगा हम. So guys, my this video got 8.5 lakh views in less than 36 hours. यहाँ पे 48 दिखा रहा है because that is the normal procedure of YouTube. So how did I manage to do this? That is a very important question. क्योंकि I was not the first person to upload such a video. There were many news channel के videos थे. काफ़ी YouTubers ने इस टाइप के इस टॉपिक से related videos डाले थे कि 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो abolish हो रहे हैं. मैंने banned ये word यूज़ किया था. डिस्कार्ड हो रहे हैं. तो आई यूज द वर्ड बैंड बिकॉज नॉर्मली पब्लिक अगर सर्च करेगी तो क्या डालेंगे? कैंसर डालेंगे, बैंड डालेंगे, मतलब ऐसे बड़े बड़े हाई फंडू इंग्लिश वर्ड्स नहीं डालेंगे. नॉर्मल वर्ड्स जो डालते हैं उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करके. तो ऑल दीज थिंग्स वर यूज्ड इन मेटा टैग्स. तो ठीक है, मेटा टैग्स तो हो गए, बट व्हाट वाज दैट वन थिंग बिकॉज ऑफ विच मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा देखा गया? तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वन थिंग. सी, मेरा वीडियो ना ही यूट्यूब ने ट्रेंडिंग में डाला था, ना ही मेरा वीडियो ज़्यादातर कहीं पे दिख रहा था. बट if you went on any video related to this topic, my video was the first one recommended besides it. So along with that, many other videos were recommended below that. अभी क्या होता है, the important thing for the person who is watching a particular video is वो वीडियो पे वो क्लिक क्यों करे. तो the important role played by the thing in this video was the thumbnail. थंबनेल की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस पे क्लिक किया है. बाद में वो लाइक करे, डिसलाइक करे. जो लोगों के पास ब्लैक मनी है उन्होंने भर भर के डिसलाइक्स मारे इस पे. मेरे मेटा टैग्स बहुत वियर्ड होते हैं. दैट इज हाउ यू डू इट. सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो बनाओ. आपने देखा मैंने जियो के साथ किया, बिग बिलियन डे के साथ किया, अभी इसके साथ किया. मैं हर रोज़ उठ के ऐसी चीज़ कर सकता हूँ, बट आई वोंट बी डूइंग दैट. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग जो है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो व्लॉग देखें. अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो ये व्लॉग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बहुत सारे लोग. तो आई एम रिफिलिंग माई टैंक राइट नाउ, क्योंकि पेट्रोल भी बिल्कुल नहीं है. तो पूरा 500 का डालने वाला हूँ. तो इनके पास चेंज नहीं है तो इन्हें परेशान नहीं करूँगा, पूरा 500 का ही डालने वाला हूँ. और आप भी यही करिए, पूरा 500 का. इट फील्स गुड. So
वी आर हियर एट दिस ईटिंग जॉइंट. यहाँ पे हम लोग शादी से पहले बहुत आते थे. कॉल्ड एज ओवन हॉट इन चेंबूर. If you're hungry, you can definitely visit this place. She is having a veg lollipop. Yeah, I don't know what's it made out of. No, she's Bro. Okay, have it. Might be hot. Be careful. It's cabbage. Paneer. And no, it's not paneer. God is always hungry. I just don't know मेरा क्या होने वाला है बाद में. So we also got a paneer roll and a chicken Szechuan roll, chicken seekh kebab. And I finished this almost. Nice. Good. It's very nice. Okay, look at this jugaad. This pastry is for her. Oh God, after a long time. Yeah. Finally, cake वाली cake खा रही है. And this is a pineapple blueberry combination kind of pastry. Again, let us know how it is. Good. Yeah, this combo is nice. I'm going to try this at home now. She makes better pastries and cake, hands down. So besides Oven Hot, you will find this vada pav vendor who makes some phenomenal vada pav. Look at the rush at it. मतलब अभी छुट्टों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, फिर भी यहाँ पे गर्दी देखिए आप. That's how good his vada pavs are. And madam here is trying out one. It's very hot. Yeah, it's extremely hot. Yeah, and I'm having for the first time. Let's see how it is. Nice, liked it, like the taste. So only Rose is right here in Chembur. अभी तक है. So yeah, I was so happy to see it. And I'm having a double chicken cheese roll. You can see the menu there. And that's how he makes it. You need to try this if you come to Chembur. Oh, Deepika. You want to try? Chicken, double chicken cheese roll. No? Okay. Street team. Okay, got it. विड्रॉल स्लिपने अच्छा. या पद्धतीने पैसे काढून मग Look at आपली those गरज भागू eyes. शकता ना. So our thug mom knows everything because she gets constant updates on WhatsApp. Yes. Am I right? WhatsApp girl she is. She has all the news all over India. She is NDTV, Times Now, everything because of her phone and WhatsApp. गौर से देखिए. चुप रे. मोदी जी से पहले न्यूज इनके पास थी. चुप रे. Too many things to unbox. Let's unbox them. So this is what all I had ordered. So these are the LED lights जो मैंने CPU में लगाए हैं. So I ordered these to put behind my television. So I'll be doing that later this week. Yeah. Apart from that, I ordered a capo. That is for the guitar. Those who don't know how to play a guitar, they don't know what a capo is. But yeah, a capo is used to reduce the neck of the guitar. Yeah, leave it. A belt for the guitar. So guitar के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है. And yes, I'll provide all the links to these things below in the description. So do check the description out. बहुत टाइम से ये सब लेना था मुझे गिटार के लिए. Finally, I've got it. Yes. Good morning. The guitar is still missing a E string. अभी मैं लगाऊंगा उसे and I'll even put the belt. So the belt which I ordered is brown in color and I feel I should have ordered a black one, but when I visualized myself आंखें बंद करके सोचा कि बेल्ट लगा के गिटार बजा रहा हूँ तो it so happened कि brown आया मेरे visualization में, तो I ordered a brown belt. Yesterday I was recording a video जो मैंने नहीं डाला, जो मैं बाद में शायद डालूंगा because I've done complete research on it and yeah, a lot of research goes behind every video. और अचानक से मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दी, धमाकेदार घमासान अनाउंसमेंट जो थी, तो उसकी वजह से आई कुड नॉट अपलोड दैट वीडियो. बट या देयर आर मेनी अदर वीडियोज़ इन द टाइम टू कम और वो बाकी सारे वीडियोज़ में उस पर काम चालू कर दिया है. वो दिखाऊंगा नहीं अभी क्या वीडियोज़ है, बट या शायद दिख गया होगा आपको, ब्लर करना पड़ेगा अभी. ये साइड तो लग गई है
you'll get this little string along with this strap. अटक गया है properly. I hope you're able to see it. गठिया मार दो, गठिया. So yes. Now I need to attach the E-string. I don't know why I like green tea. Deepika hates it. Where are the strings? String number 1 हमेशा यही टूटता है साला. Tuner's battery is dead. It's out of tune. So Deepraj has his exams on, and so for focusing I'm using Deepika. And most of my days go in doing this, setting up, writing the plot, finding information, scripting out the video. Yeah, that is what I put most of my time in. Let's start working. Hello, 1, 2, 3, mic testing. घाणेरडा smell stink. Okay, I farted. Mic testing, 1, 2, 3. 1 2 3 mic testing, mic test. 1, 2, 3, mic test. 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Look at it there. So mom is continuously telling me to shave. Like I'm telling her कि it is no shave November इसलिए मैंने दाढ़ी बढ़ाया है. Even Deepraj is doing it. So yeah, look at him. इसको थोड़ा कम दाढ़ी आता है, इसका खेती ज़्यादा नहीं है. And इसका मूंछ भी मेरे जैसा ही है, ज़्यादा thick नहीं है. In fact इसको मूंछ ही नहीं है. Because I am 20, he is 28. So तब So तक आ what? जाएगा. तब तक आ जाएगा. When I was 20 तब भी से मुझे इतना ही मूंछ है. थोड़ा dense नहीं है. I know that. थोड़ा पानी डालना पड़ेगा. That's a lie. That's a lie. अभी इसका beard बहुत भर गया है. So what is No Shave November? Why we are doing this? For cancer awareness, and people start losing their hair when you do chemo and all. So this is for cancer awareness in men. Okay. So yeah, men generally tend to get prostate cancer and everything, but I'm doing it because I can and I like to. And plus there is a cause attached to it. So yeah, the mummy मैं दाढ़ी नहीं करना. Deepika will be more concerned about. She is busy eating now. What? Deepika likes my beard. उसने तो बोला है, पहले ही बोला है. What are you guys eating by the way? मूंग भजी. मूंग भजी. Okay, some more food. माँ कसम दिखाने का नहीं रहता है तो भी. अरे how much will I have? मम्मी मी दाढी नाही करणार आहे. काय आंघोळ न केल्यासारखं दिसतो फार. मी कैसा दिसतो? अंघोळ आणि दाढीचा काहीच संबंध नाही. पण तसं वाटतं ना, आंघोळ नाही केली असं वाटतं. Maybe they are jealous because they can't grow a beard. Already in this video आप लोगों ने बहुत सारा खाना देख लिया है and I'm going to show you some more. So this is how I normally eat. I take a roti and whatever I have like bhaji, or right now I have this batata ka bhaji, potato का bhaji, bhajiya, whatever. तो इसको ऐसे डाल देता हूँ मैं बीच में. I'll show you. ये अभी ताज़ा एकदम गरम गरम दीपिका ने बनाया. उसका मैंने ऑयल निकाल लिया है टिश्यू पेपर में डाल के. See, this is how I put it in the center. उसके बाद ये रोटी को ऐसे कर लेता हूँ this way and then like this. So this I call as a pocket. So this is my pocket. Look at this. Yeah, and then I eat it. Pocket rocks. Deepu na hai. Good morning guys. I need to show you something. See this guy? His name is Amit Sharma. What does he do? Let's see. So he has this page in which he has put all pencil art. And what did he do for me? This beautiful thing. Look at that. Amit Sharma yaar abhi utha hu main and you just made my day. This picture that you shared, actually my mom and my cousins downloaded it and trended it on WhatsApp. और वहाँ पे मैंने देखा कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है. आई विल शेयर योर लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. इसकी पेज लिंक ज़रूर चेक करिएगा. बहुत ही अच्छा पेंसिल आर्ट किया हुआ है. एंड ब्रो थैंक यू सो मच. आई लव्ड इट. सो माई ग्रैंड मदर हैड ऑर्डर्ड सम सामान फ्रॉम नाप्तोल. दिस इज द 81 piece डिनर कुकिंग व्हाटएवर सेट. एंड द यूटेंसिल्स दैट यू गेट हियर, चलो 81 pieces तो है पूरे.
but they are of a really low quality. What they are showing, like when the tape is going on, I'll show you the video. See, ये जो दिख रहा है आपको, ये exactly ऐसा सेट मिलेगा आपको, और इसमें जो बर्तन दिखा है ना वही सेम मिलेंगे, पर वीडियो में ये जो दिखता है ना यहाँ पे, ये आपको नहीं मिलेगा. See these plates, these are thicker one, these spoons, those are different. That glass, that is different. ये ऐसा मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा, वो भूल जाओ. नहीं 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 नहीं, ये ऐसा वाला नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा. ये जरा दबा के दिखा दूं. बस ना हे मूर्खा. Yes. So yeah, it does bend. Be very serious now. I'm with my college friend right now. Sanjay here. This is Sanjay. इसकी शादी हो रही है. तो शादी से मुझे एक चीज़ याद आई कि whenever you go for शादी वाला शॉपिंग, सारे लोग आपको एक ही लाइन बोलेंगे कि शादी एक ही बार करते हो, ज़्यादा पैसे के बारे में मत सोचो. बट दैट इज़ अ हॉरिबल लाइन. उसके डोंट फॉल फॉर इट. और हमेशा किफ़ायती दाम में शॉपिंग करना. मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है फॉर दैट. बताने का ही नहीं कि शादी का शॉपिंग है. वाओ, लुक एट दिस. I'm at Phoenix Market City, Kurla, and we are here to watch a movie. Damn, kids are getting all excited. Look at these dinosaurs. Let me show you. Bloody, how many are there? 9 dinosaurs? Yeah. So if you come to Phoenix, you can check this out. Like some cool shit happening here. You like that? Getting all excited like those kids? Yes. You want to ride that dinosaur? हाँ. The big one? T-Rex? T-Rex. मजा आएगा ना पीठ पे बैठने को. So that there behind everyone is Deepika. खा गई. And Bisleri has introduced this new soft drink. तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ soft drinks लिए. These people were distributing out for free. What happened? Okay. And she shamelessly had gone to ask for some more free samples. And yes, I told her to do that. This lady here is drinking the purple one, peanut colada. This one is the best one. So definitely try this thing. I liked it. But for 20 rupees, I don't think it is worth it. Bisleri 10 रुपया कर दो. We are going to watch Ventilator, which is a Marathi movie. And movie कैसा है उसका review मैं आपको movie के बाद दूंगा. So see you after the movie. So you know I like to keep it fresh, right? मैं technicality में ज़्यादा नहीं जाऊँगा because after doing next up, the way I look at films and videos is completely different. That is what the movie teaches us. It teaches us not to be practical and how important the emotions are. Like if you remove emotions out of your life, मज़ा नहीं रह जाएगा. Look at her. She was crying. Like second half में जो story और जो execution है, it is brilliant. मतलब फर्स्ट हाफ में मिस्टेक्स निकाल सकता हूँ बट सेकेंड हाफ इज सिंपली अमेजिंग. जो लोग मराठी नहीं है, महाराष्ट्रियन अगर नहीं है तो काफ़ी डायलॉग्स आपको समझ में नहीं आएंगे. सबटाइटल्स है बट स्टिल टू अंडरस्टँड दोज डायलॉग्स इट विल बी डिफिकल्ट. स्टिल इट इज वर्थ वॉचिंग. या डेफिनेटली. आणि जर तुम्ही मराठी आहात तर डेफिनेटली हा मूवी तर जरूर बघा, नक्की. अँड नाव वी हॉग.